सो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का। होप ऑडियो मेरा क्लियर आ रहा होगा आपको, क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है। वेल अगर ऐसा है तो ज़रा बताना कि कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि मैं यहाँ कॉम्बिनेशन सेट कर रहा हूँ और लंबा टाइम है हमारे पास अभी भी, क्योंकि लगभग 30 मिनट में जो जैक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन जो भी है उनका लॉन्ग फॉर्म, जो जैक्सा है उनकी लाइव स्ट्रीम शुरू होगी। सो उसके लिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि वेदर कॉम्बिनेशन करेक्ट है कि नहीं। जिसकी में कॉम्बिनेशन सेट कर रहा हूँ और लंबा टाइम है हमारे पास अभी भी। ओके, लगभग कॉम्बिनेशन भी सही है हमारा। थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक को जो है वो मैं इंक्रीज कर देता हूँ, 25 पर ले जाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। यस, ओके। अभी क्योंकि 30 मिनट में जो जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा जो भी आप कह सकते हो उसे लाइव एयर जाने में टाइम लगता है ना, तो इसके लिए मैं वेट कर रहा था। ओके, हाँ, ओके ओके ओके। बेसिकली समझ में आया कि जो बैकग्राउंड में ऑडियो लाइब्रेरी जो चल रहा था वो बंद हो चुका है। अब ये दूसरा चल रहा है। होप अच्छा होगा ये। एनीवेज गाइस, बेसिकली मैं चेक कर रहा था कि वेदर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रही कि नहीं, और वेल थोड़ा बहुत कुछ सुनाई दे रहा है। गेस अगर है तो ज़रा बताना मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा मेरे फ़ोन से। आप खुद ही सुन रहे हो जो मैं सुन रहा हूँ यूट्यूब से। बताना मुझे। अभी दूसरा चल एनीवेज, सुनाई तो नहीं दे रहा मुझे तो। वेल अभी आइए बात करते हैं जैक्सा के बारे में। जैक्सा का फुल फॉर्म हमारा, जस्ट अ मिनट, हाँ ओके। जैक्सा का फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस। उन्होंने स्लिम नाम का एक लूनर लैंडर, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, तो ये जो स्लिम लैंडर है, लूनर लैंडर, इन्होंने इसको लॉन्च किया था लगभग सितंबर को। हाँ, लगभग 6 सितंबर 2023 को 11:42 UTC पर। और अगर हम जापान के स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार बात करें, यानी JST के अनुसार बात करें, तो 7 सितंबर 8:42 पर इन्होंने लॉन्च किया था। और ये एक सक्सेसफुल मिशन था। उसके बाद जापान 5th कंट्री बनेगा सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला मून पर। आप सभी को पता होगा कि जापान का आई गेस मिशन था इससे पहले, मतलब जापान के आई गेस आई स्पेस का वो मिशन था। जी हाँ, आई स्पेस का आई गेस वो मिशन था जब उन्होंने हकुतो आर लैंडर को लैंड करने का प्रयास किया, जो असफल रहे थे। ठीक है भैया, इस बार सक्सेसफुल होंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज इस लाइव में, क्योंकि देखते हैं। ओके, हाँ, श्री साई दत्ता, हाँ सुनाई दे रहा हूँ साउंड। ओके, हेलो यश, थोड़ा आवाज़ आ रहा है। ओके ओके, मैं 7:30 तक रहूँगा इधर, उसके बाद फिर एक्स पे एक्टिव रहना है मुझे। ओके फाइन, ओके ओके। हाँ, वो 7:30 बजे लाइव भी आएंगे, तो आई गेस आप करोगे, जो अपडेट है वो दोगे आई गेस। वैसे एनीवेज, मैं बिट रेट बढ़ाऊँ क्या नहीं, वो थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हाँ यूट्यूब की एक एरर जो दिखाई दे रहा है वो है बिट रेट कम है, जिसके चलते बफरिंग हो रही है आपको। सो आगे बढ़ते हुए हम वो देख रहे थे हमारे जैक्सा के स्लिम के बारे में, जो स्लिम लैंडर है। बेसिकली इसको 6 सितंबर को लॉन्च किया गया था, और उसके बाद इसने 1 अक्टूबर 2023 को जो ट्रांसलूनर इंजेक्शन का बर्न है वो किया था, और 25 दिसंबर 2023 को इसने लूनर ऑर्बिट यानी मून के ऑर्बिट में एंट्री की, और आज यानी 19 जनवरी 2024 को ये लैंड करने जा रहा है लूनर सॉइल पर, लूनर रेगोलेज पर। बेसिकली बैकग्राउंड जान लेते थोड़ा बहुत। देखिए, स्लिम ये जापान का फर्स्ट लूनर सरफेस मिशन है। आई गेस फिर आई स्पेस किसका था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आई स्पेस का। मुझे आई स्पेस का
जानना है थोड़ा सा। ये भी इनका ही था ना, हाकुतो आर, आई मीन जापान का ही था हाकुतो आर। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक। हाँ, जापान का ही था, जापान का ही था हाकुतो आर मिशन। पर उसके बाद जो है उन्होंने शिफ्ट किया स्लिम पर। मतलब बेसिकली हाकुतो आर मिशन आई स्पेस का था और ये जो स्लिम है वो जैक्सा का होगा ऑफ कोर्स। तो देखिए मज़ा आएगा आज के इस लाइव में भी, जब लैंडिंग होगी अच्छा लगेगा। वैसे कुछ कमेंट लाइव से कुछ नहीं, ओके। बेसिकली आगे बढ़ते हुए हम एक बार जान लेते हैं क्या हो रहा है। देखिए जो ये स्लिम है, ये जापान का पहला फर्स्ट ऐसा लैंडर है जो लूनर सरफेस पर लैंड करेगा। उसके साथ ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा एक प्रिसाइज लैंडिंग, पिन पॉइंट लूनर लैंडिंग ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा। उसके साथ ये रिकॉग्नाइज करेगा लूनर क्रैटर्स को, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो उनकी टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके, और बाकी चीज़ें। और ये थोड़ा सा इन्होंने इतिहास मतलब बैकग्राउंड बताया है कि कहाँ लैंड करेगा। देखिए अगर हम बात करें तो स्लिम सॉफ्ट लैंड करेगा, उसके साथ उसके एक्यूरेसी है 100 मीटर की। मतलब लगभग जो उन्होंने टारगेट दिया है उसके इर्द गिर्द 100 मीटर के इर्द गिर्द रेडियस के वो लैंड करेगा। उसके साथ अगर हम कंपैरिजन करें 1969 अपोलो 11 ईगल लूनर मॉड्यूल लैंडर के साथ इसकी एक्यूरेसी की, तो उसका एक इलेप्टिक मतलब उसके लिए वो एक इलेप्टिक था। यानी इलेप्टिक की अगर हमें आपको इलेप्स पता होगा तो आपको ये समझ में आएगा। वो बेसिकली एक इलेप्टिक एरिया था, यानी 20 किलोमीटर्स यानी 12 माइल डाउन रेंज, और क्रॉस रेंज यानी वाइड 5 किलोमीटर। ओके, उसके साथ जो जैक्सा के डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ जनरल है उनका ऐसा मानना है कि एक्सट्रीमली प्रिसाइज लैंडिंग होने वाली है ये। उसके साथ ओके हाँ, वही स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए वो जो ये लैंडिंग है वो लीड करेगी। बस आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं हमारे स्लिम की। देखिए मिशन में स्लिम जो है, स्लिम को मतलब स्लिम वॉज सक्सेसफुली लॉन्च टुगेदर। मतलब ये दो अलग अलग पेलोड थे, दो अलग अलग सैटेलाइट्स थे। पहला था XRISM, यानी क्या बोल सकते हैं इसे, एक्सट्रीम्स जो भी है वो मतलब बेसिकली स्लिम और एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन, इन दोनों को एक साथ लॉन्च किया था हमारे मित्सुबिशी के लॉन्चर पर, आई गेस। जी हाँ, मित्सुबिशी के लॉन्चर पर इसको लॉन्च किया था। H11A202 मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के एक लॉन्चर पर इसको लॉन्च किया था, जिसे हम H2A भी कहते हैं। उस व्हीकल पर इन दो अलग अलग सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। पहला आता है स्लिम और दूसरा आता है ये एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन, जो कि एक स्पेस टेलीस्कोप है, जिसको 6 सितंबर 2023 को लगभग 11:42 UTC पर लॉन्च किया गया था। यानी जापान मानक समय के अनुसार बात करें तो 7 सितंबर को 8:42 पर सुबह। तो भैया जो हमारा एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन है उसने तो उसका काम किया, कर रहा है। अब जो स्लिम है वो उसकी लैंडिंग करने जा रहा है शियोली क्रेटर के आसपास। यानी जो शियोली क्रेटर जो 13.3 डिग्री साउथ और 25.2 डिग्री ईस्ट पर स्थित है। उसके साथ स्लिम ने एंट्री की थी लूनर ऑर्बिट पर 25 दिसंबर को 2023। इसमें एक रोवर भी है, दो रोवर है आई गेस। पहला आता है लूनर एक्सकर्शन व्हीकल 1 या LEV-1। ये एक लूनर रोवर है जो मूव करेगा हॉपिंग मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके, और ये डायरेक्ट टू अर्थ कम्युनिकेशन करेगा। ओके, और हम थोड़ा इसको और डिटेल में भी जानेंगे जब इनकी लाइव चालू होगी तब। वैसे इसमें कुछ साइंस पेलोड्स भी जैसे कि थर्मोमीटर है, रेडिएशन मॉनिटर है, इंक्लाइनोमीटर है। इंक्लाइनोमीटर
से हमें ये पता चलता है कि कहाँ ज़्यादा ढलान है, मतलब कहाँ इंक्लाइन सरफेस है वगैरह वो सब, मतलब शॉर्ट में बोलूँ तो एलिवेशन वगैरह हम ढूंढ सकते हैं इस इंक्लाइनोमीटर से। और इसमें इस रोवर मतलब इस बेसिकली हमारे लैंडर में दूसरा रोवर भी है, लूनर एक्सकर्शन व्हीकल 2 या LEV-2, ओके, बेसिकली जिसे यहाँ सोरा क्यू भी कहा जाता है। ये एक टाइनी रोवर है जिसको डेवलप किया है जैक्सा ने एक जॉइंट कॉरपोरेशन के साथ, टॉमी और तथा सोनी ग्रुप और दोशीशा यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि स्लिम पर उन्होंने माउंट किया। ये रोवर का मास सिर्फ और सिर्फ 250 ग्राम से, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ। उसके साथ LEV कुछ LEV पर आई गेस 2 अलग अलग स्मॉल छोटे कैमरास है। उसके साथ ये आई गेस 2 घंटे तक चलेगा, रन करेगा लूनर सरफेस पर, ओके। हाँ, तो ये एक सेकेंड रोवर है जो ऐसे कुछ प्रकार के ऑपरेशंस करेगा लूनर सरफेस पर। और जो पहला फर्स्ट वन बीन ऑन हकुतोर मिशन, मतलब पहला जो बेसिकली पर्टिकुलर रोवर था वो आई स्पेस के मिशन पर था, जो हकुतोर मिशन था उस पर। अभी आगे बढ़ते हुए खत्म हो, एक चाइना में है और एक जापान में है आई स्पेस। चाइना वाला एल्विस के ऊपर काम करता है और जापान वाला मून मिशन के, ओके। तो स्पेस 2 अलग अलग है, आज मुझे पता चला, क्योंकि मैंने ज़्यादा वो उस पर ध्यान नहीं दिया। अभी मैं सिर्फ इंडिया पर फोकस करता हूँ। सो एनीवेज, थैंक यू श्री साई दत्ता ज्ञान बढ़ाने के लिए। जुड़े रहिए हमारे स्ट्रीम के साथ, काफ़ी लंबा समय अभी जाना है, मज़ा आएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम अब और इसमें क्या दिया है। वैसे क्या ही पढ़े, अब ट्रैजेक्टरी वगैरह उन्होंने दी है वगैरह वो सब। और अभी कुछ ही मिनटों में, लगभग 10 मिनट में लाइव आएगा जैक्सा। नोटिफाई मी पर क्लिक करके रखता हूँ ताकि जब जैक्सा लाइव आए तो समझ में आए कि जैक्सा लाइव आया है। और ये आप देख सकते हो जैक्सा का, ये बेसिकली मैंने स्ट्रीम भी ओपन करके रखा है ताकि जब जैक्सा लाइव आए तो मुझे समझ में आए कि जैक्सा लाइव आ रहा है या जैक्सा का लाइव चालू होगा वगैरह वो सब। एनीवेज, फ्रेम्स काफ़ी ड्रॉप हो रही है, गिव मी अ मिनट, आई विल फिक्स इट ऑल, ओके। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। ओके गाइज, आई एम बैक अगेन। बेसिकली वो जो अभी इंटरनेट था ना वो थोड़ा स्लो था, इसलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। अभी आई गेस क्लियर हो चुका होगा, सारी सॉर्टिंग हो गई है मेरी, स्पीड है अभी इंटरनेट में भी। एनीवेज, बेसिकली मैंने रिफ्रेश किया डैशबोर्ड एक बार फिर से। अभी चलिए बढ़ते हैं हमारे हाँ, मुझे स्विच भी करना है क्योंकि बेसिकली आप वही ये देख रहे थे हमारा थंबनेल। आगे बढ़ते हुए आइए बात करते हैं हमारे वही लैंडर की बात ही क्या करें, खैर बात कर ही दी है हमने इससे पहले भी। वैसे मून लैंडिंग चंद्रयान 3 के बाद अब जैक्सा दूसरा पहला बनेगा लैंड करने के लिए मून पर। चंद्रयान 3 जो था, चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम, वो उसकी लास्ट लैंडिंग हुई है मून पर। अब देखते हैं कि ये जो दूसरी लैंडिंग है वो कैसी होती है।
उम्मीद है कि सुंदर लैंडिंग हमें देखने को मिलेगी। सो वेल आगे बढ़ते हुए काफ़ी कोल्ड कफ भी है मुझे वैसे। हम अभी स्विच करेंगे कुछ ही मिनटों में हमारे जैक्सा के का स्ट्रीम पर। अभी भी 6 मिनट और 28 सेकेंड और जाने हैं, तब तक आप देखो और मजे लो, बस कुछ कह नहीं सकते हम और। ओके, एनीवेज गाइस, ओके वेल मजे लो बस। ओके, basically I am searching. Okay, I can't. Okay. Okay, well, मैं ढूंढ रहा हूँ मेरा कर्सर, पर कर्सर ही नहीं मिल रहा। कर्सर डोंट नो कहाँ गया। सिस्टम रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके, सिस्टम रिस्टार्ट कैसे करें, आइडिया ही नहीं है कुछ। ओके, सिस्टम रिस्टार्ट करते हैं हम। पावर ऑफ करके एक बार देख लेते। वेल अगर हम बात करें इस आज की तो काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों। ओके, यस, एक बार लाइव चल रहा है, लाइव ही है। यस, वेल हाँ, ओके, मैं बाहर आया इसलिए नहीं दिख रहा है अभी। यस, व्हाट दिखेगा समवेयर, आई एम गेसिंग कि दिखेगा आपको। यस, दिखना तो चाहिए। उम्मीद तो है कि वो दिखे। डोंट नो, हाँ अभी दिख रहा है। सो ओके, यस, वेल मून लैंडिंग अराउंड मतलब रात के 12:20 पर होगी जापान टाइम के अनुसार, और इंडियन टाइम के अनुसार 8:20 या 8:30, समथिंग लाइक दैट। सो मज़ा आएगा आज। उम्मीद है कि आप लोग भी इस लैंडिंग को देखोगे और मज़ा लोगे इस लैंडिंग का भी, क्योंकि यार पिछली बार हम हमारे साथ भी फेलियर हुआ था। तो वी आर नियरली अबाउट हमें एक अंदाज़ा है, तो वही। वेल दोस्तों, कुछ क्वेश्चन करो यार, मुझसे बात करो, बी फ्रेंडली विथ मी यार। आई मीन जब भी मैं देखता हूँ तो कॉन्करेंट व्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं वो 0 ही होते हैं हमेशा। ऐसा क्यों, पता नहीं। ओके वेल, चलो मैं खुद ही कुछ तो शुरुआत करता हूँ। आप लोग ऐसे भी टाइम पास करने वाले हो, क्योंकि जो आते हैं वो टाइम पास करने वाले ही आते हैं यहाँ ज़्यादातर तो। सो एनीवेज मैं ही कुछ शुरू करता हूँ, कुछ तो बातें करता हूँ। अमूमन टाइम पास करने वाले लोग आते हैं तो मैं भी कुछ कर देता हूँ अभी बातें। वैसे हम बात कर रहे थे हमारे स्लिम लैंडर की, जो बेसिकली लैंडर है हमारे जैक्सा का। सो यस, ओके, हाँ। सो वी वे टॉकिंग अबाउट दिस वन, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। तो अभी OBS को थोड़ा शिफ्ट करते हैं हम इस पर, ताकि OBS बेसिकली ताकि जो हमारा OBS है वेट मिनट, लाइव स्ट्रीम, यस, एक्चुअली हाँ, ओके।
बेसिकली मैं ना ओके 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 उनका लाइव चालू हो चुका है. दे आर लाइव गाइस, दे आर लाइव, दे आर लाइव. वो आपको आवाज़ आ रहा है, मैं भी सुन लेता हूँ थोड़ा बहुत. Aisasa Shin and Kit Kitagawa, Director of JAXA Space Education Centre. We will be the English narration on this channel tonight. So SLIM was launched from JAXA's Tanegashima Space Centre on September 7th last year and has been flying smoothly so far. At around midnight tonight, which will be by then January 20th, just as the date changes here in Japan, the descent operation to the lunar surface will begin, and the lunar landing is scheduled for around 20 minutes past midnight. During the broadcast, we'll first provide an overview of the SLIM mission to signify its importance from an engineering standpoint, and take a look at the science that we're hoping to achieve with SLIM. Then the landing operation will be relayed from around midnight, so do stay with us. We're going to start with a history of Japanese lunar exploration and SLIM itself. ここまでどんな歴史をたどり、その先にどんな未来が広がっているのでしょうか。日本の月探査の幕開けは1990年に打ち上げられた光学実験衛星飛天。月のアメリカ、ソ連に次いで月の周回軌道に探査機を送り込んだ国となりました。探査機の速度を自由自在に操れるこの技術は宇宙探査の大きな一歩となりました。飛天に続くミッションとして2007年に打ち上げられたのが月周回衛星かぐやです。かぐやには当時史上最多となる15種類もの観測装置を搭載。アポロ計画以来初となる本格的な月の観測が行われました。月の地形や地下の構造を明らかにし、世界の月探査を先導する存在となったのです。かぐやの偉業は科学技術の成果だけにとどまりません。月の地平線から昇る青い地球の映像は多くの人々の心を捉えました。正直言ってかぐやの印象的な映像を見て、研究者としての人生が大きく変わったと思います。私はもともと地球の磁気圏のプラズマの研究をしていたんですけれども、かぐやの映像を見たことによって、地球のことだけでなくて、月のような他の星の研究もしてみたいという、もう絶対面白いはずだという、そういう意識を持ちました。かぐやの成功をきっかけに国際宇宙ステーションの後に続く国際月探査への機運が高まりました。この動きを受け NASA をはじめ各国の月探査機がかぐやに続いています。かぐやの成果も受け継ぎ、新たに開発された次世代の着陸技術で月への着陸探査を行うのがスリムプロジェクトです。国際的な月探査であるアルテミス計画に先行して月探査の新しい未来を切り開くことが期待されています。スリムではまだ世界で誰も実現したことがない100メーターという高い正確さで狙ったところに降りるための技術の開発をしてきています。これができるようになると、例えばクレーターの隣にあるこの岩石の観察をしたいといったような科学者たちの声にも応えることができるようになります。傾斜地に降りるための技術と合わせて、降りられるところに降りるのではなく、降りたいところに降りるということをこれから実現できるようになるというふうに考えています。スリムが着陸するのは三木の海の近くにあるクレーターしおりです。スリムで採用されたのが斜面でも着陸できる
2段階着陸方式。姿勢を傾けながら最初に1本の主脚を設置。その後斜面に倒れ込むようにして残りの足を設置させ着陸するのが特徴です。カメラが載っているんですけれども、これで月のクレーターを撮影して瞬時に今月の上のどこにいるのかというのを割り出して次の目標地点に素早く修正して飛んでいくと、そういうようなことをスリムが自身で考えてやるというのが非常に重要な技術でして、この部分には注目していただきたいなというふうに思います。スリムが月に着陸する際には降りてくる向きや角度にもよるんですが、最大で2トン近くの荷重がスリムに加わります。加えられてもスリム全体が壊れないような設計をするのが一番苦労した点です。マルチバンド分光カメラなんですけれども、スリムの本体と同様に小さなもので作らなきゃいけないですし、軽くなければいけないというたくさんの制約があったので、それを達成するために観測機器のチームでですね、すごく知恵を絞っていろいろな新しい技術を取り入れて挑戦的なカメラになっています。スリムが切り開くピンポイント着陸をはじめとする技術は今後どのような形で花開いていくのでしょうか。ここでやられます技術は将来の月探査におきましてもう大変重要な技術様式であります。でこれをさらに応用いたしまして日本から続々と探査機を月表面に送り込みたいと考えております。具体的には月極域探査ルペックスローバーであるとか、宇宙飛行士を活動させるための有人与圧ローバーといったものが計画されております。月に進出するのみならず火星探査におきましてこの技術は応用される見込みになってございます。ここで新しい技術を獲得することによってますます日本は自由自在に宇宙で活動することができることになるだろうと考えているものです。これからも JAXA 宇宙科学研究所は挑戦をし続けます。We will now discuss more about the moon landing with SLIM with our guests on this broadcast. Our first guest is from the SLIM project team, Mori Osamu, in the Department of Interdisciplinary Space Science here at ISRO JAXA. Mori-san is going to start by giving us an overview of the SLIM mission. はい、それでは森さんには、スリムの概要であるとか、それから打ち上げからここまでの経緯について、解説をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。 We're going to share some slides. Here we go. So, from an era of landing where we can, we're going to move with SLIM to an era of landing where we want. So the SLIM mission has two main objectives. Objective A is a technology demonstration of a high-precision pinpoint landing on the moon. With a soft landing by SLIM, Japan will be the 5th country to land on the moon after the Soviet Union, USA, China and India. But the landing precision will be the highest in the world. So conventional lunar landers actually have a landing accuracy of several to tens kilometers, whereas SLIM is aiming for landing accuracy of only about 100 meters. And this technology is necessary for the era of full-scale lunar surface exploration activities where we want to control very precisely where we're going. The second objective, Objective B of the SLIM mission, is the realization of a lightweight lunar planetary probe system. So SLIM includes innovative weight reduction through improvements to the spacecraft structure, chemical propulsion system, power supply and orbit. And this will lead the development of a lightweight lunar probe will lead to the ability to have an increased payload for missions, such as, for example, sample return missions from the Earth or to Mars, or really anywhere else, because you have more of that weight available for instruments.
音っていうのが必要になってしまいます。ですので、システムを少し減らすだけでもその数倍の効果が期待できるということになります。で、これによって、ペイロードを増加させたり、もっと燃料が必要となる地球機関や火星探査にもつながるといったことになります。では、スリム運用のこれまでについて紹介していきたいと思います。 So from here we're going to look a little bit more at SLIM's configuration and some of the components that allowed it to be such a lightweight spacecraft. So here we have the SLIM configuration itself. The mass of SLIM is 190 kilograms when it's in what we call a dry condition, that is, there's no fuel. And it's 710 kilograms when it's wet, so this is at launch when it's fully fueled. And you can see the features of SLIM's design in these images, such as, for example, the thin film solar cells that stretch across the body of SLIM, and the navigation cameras that, as we'll see a bit later, are a key component to SLIM's pinpoint landing mechanism. You can also spot the two main thrusters of the main engine and the smaller auxiliary thrusters, of which there's 12 around the outside, and SLIM's feet on the right here, which are the small shock-absorbing meshes. So here we have a bit more of SLIM's structural design. Top to bottom here in Japanese is written the PAF rings, which couple to the rocket. After that there's the tank, which is also used as a structural base of the spacecraft. Below that there's the deck panels with the landing sensors mounted on them. Below that again there's the RCS panel, which has the thrusters. Then we have the electrical equipment box and the instrument box with the scientific observation camera. So one of the innovative things here is actually SLIM's tank, because it's this integrated dual oxidizer tank that reduces weight, and then the cylindrical tank itself forms the structural base of the spacecraft, which also significantly contributes to an overall mass reduction of that spacecraft. Now the bottom part of the slide shows the attitude of SLIM during landing. From about 50 meters above the surface, SLIM will rotate to a vertical position and start to descend. But just before landing, SLIM will lean forward so that its rear, Okay, Rishabh Jain is saying hello. Hello भाई, कैसे हो आप? मस्त हो ना एकदम? वैसे हम ये enjoy कर रहे हैं, देखो जरा. And in the bottom right here we have the mascot SLIM Moon, which you'll often see on our Twitter feed, slim_JAXA. And now we're going to turn to the SLIM tank with the chemical propulsion system. Now, as I ओके भाई, 8:30 पर जो इनका डिसेंट है वो शुरू होगा, तो उसके लिए हम अभी रुके हैं. पहले हम अभी ये लाइव स्ट्रीम में जो कह रहे हैं वो सुन रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि ये भैया आउट ऑफ इंडिया है, तो मेरे पास तो नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, इसलिए मैं ये सुन रहा हूँ. और मैं गुजारिश करूँगा कि आप भी सुनो. So the main engine is actually seen at the bottom left of the slide, and it uses a ceramic combustion chamber that was actually developed here in Japan. And it's designed to use an impressive combination of a wide thrust range and pulse operation. It's not been found anywhere else so far. The high performance also helps the overall mass reduction of the propulsion system. And then on the bottom right we have the auxiliary thrusters, which have a thrust of about 20 newtons. This is a 12-unit configuration. And by making a different pattern of thrusters fire at different times, you actually control the spacecraft attitude, orbit maneuver, and precise landing. Now we're taking a look at the power supply of the spacecraft. So at the top here we have the solar batteries. These are thin-filmed triple-junction solar cell sheets. They're lightweight, they're flexible, and they're highly efficient on curved surfaces such as the SLIM tank. Below that we have the batteries, the lithium-ion battery. The outer casing is made of stainless steel. There's two sets of these cells that are bound by carbon fibre reinforced plastic CFRP plates, and these are designed to stand vibration and impact during launch, as well as charging and discharging in a vacuum environment. And then right at the bottom we have the integrated power control unit. This handles functions like solar power generation, the power distribution, heater control, battery charge and discharge, and thruster valve operation. So this is actually SLIM's orbit.
which performed what we actually call a swing-by orbit, which means it reached the moon, it launched in September, and we actually reached the moon as early as October at the beginning of that month. But rather than stopping there, we actually swung outwards, and this is the Okay, basically अब ये explanation दे रहे हैं कि हमारा जो लैंडर है स्लिम लैंडर वो कैसे मून के पास गया. जरा क्यूरियोसिटी से सुनते हैं, इसे देखते हैं क्या कहते हैं वो. on Christmas Day. There Slim goes, oh, and there's the swing by. And then we started coming back towards the moon on the 6th of November before going into lunar orbit. So the advantage of this swing-by orbit is rather counterintuitively, it saves a lot of fuel, because while it's a very long distance, when you reach these very far distances from the Earth and Moon, you can actually use the gravity of the Sun, Moon and Earth to bring you back towards the Moon without exerting a lot of thrust fuel. So it's long, but it's efficient. And once we entered into orbit on Christmas Day, we started to change the orbit to become more circular. Slim entered originally an elliptical orbit, and then passing between 4,000 kilometers and 600 kilometers from the lunar surface, and then it became more circular and has gradually been lowering since then. So let's look at the demonstration of the technology needed for high precision landing, this pinpoint landing on the moon. Okay, basically आवाज थोड़ा खराब है इसलिए आवाज थोड़ा खराब आ रहा है इसलिए मैं कम बोल रहा हूँ. So how does Slim actually do this very accurate landing? ओके गाइज, और कम किया मैंने बेसिकली ऑडियो मेरे माइक का, तो अभी वो हमिंग पैटर्न आना तो कम होए. Wings that you normally see with conventional spacecraft. This is very efficient for space, among other things. This is because Slim will be landing in the morning and it needs more sunlight, so it has to be tilted. Okay, now we are going to go and look at the technology for the high precision landing, and in particular this pinpoint landing technique. This is the mission movie for Slim. We're going to do a run through from the launch through to arriving at the moon. So this is a spacecraft separation. And then the first step is both an Earth swing by, where we use the gravity of the Earth to give us a kick in the right direction. And this is followed by the lunar swing by that we mentioned earlier, where we actually pass the moon and go out to a much further distance in order to use the gravity of the Earth, Moon, Sun system to pull us back. And now we're observations from lunar orbit. This is part of the vision-based navigation using the onboard cameras. So Slim's cameras scan the ground beneath it on the lunar surface and identify craters, which helps Slim know where it is. Now we rotate to a vertical position as we prepare for landing. And Slim starts scanning the ground again, this time looking for obstacles that would actually be dangerous to the spacecraft should it land directly on them, for example, large boulders. And if it spots a large boulder, it moves horizontally in order to avoid that boulder into an open space. And then just before landing, it's going to release the spacecraft's two rovers, LEV-1 and LEV-2. And then here is a two-step landing where we land on that back lead first and then tip forward onto the front landing gear. ओके गाइज, उम्मीद करते हैं कि ये मिशन सक्सेसफुल हो. वैसे आप लोगों का क्या कहना है मुझे लाइव चैट में बताना. मैं देख रहा हूँ, वैसे पढ़ रहा हूँ. And this is LEV-2, the little ball rover. We'll talk a little more about that later. It springs open to actually have a wheeled format, so it will be moving along the lunar surface with wheels.
And SLIM is also equipped with a near-infrared multi-band camera, and it will take observations from there. So now we look again at this landing sequence. So the spacecraft starts with a powered descent from an altitude of 15 kilometers and approaches the target point on the lunar surface using this image. Okay, तो देखते हैं कि कैसा होता है ये मिशन. उम्मीद है सक्सेस हो. Then guiding to its correct location. At an altitude of 7 kilometers, the spacecraft will transition to a vertical descent, and precise measurements of the altitude will be taken with the landing radar. And then finally, the two-step landing with the autonomous obstacle detection that we saw in the movie will be performed before we're safely on the ground. Okay, so finally थोड़ा बहुत कम आवाज आ रहा है, वही बफरिंग का. अच्छा है. आगे देखते हैं डिसेंट कैसे होता है इनका. And this whole thing will take about 20 minutes, which is sometimes known by the team as 20 minutes of terror. So how do you actually know where you are on the lunar surface to do these pinpoint landings? Unfortunately, unlike the Earth, there is no GPS on the moon. GPS devices do not work. So therefore, we need to use other ways to find our location over the lunar surface. Now, conventional landers plot their trajectory from the Earth, and then they use their inertial navigation equipment, such as the accelerometers and the gyro sensors, to work out where they are. And then this allows them to find roughly their target location and land. However, those techniques are not particularly accurate, and little measurement errors add up all the way through to end up as a result with quite a large landing area with these conventional techniques. So in order to improve this, what we do is we add in this image matching scheme, which allows SLIM to have a much better assessment of where it is on that lunar surface by using its navigation cameras to photograph the pattern of craters below it on that lunar surface. So here's the process of that. We capture images with the navigation camera on SLIM, and then an extraction software program is performed to actually identify those craters, which are now circled in blue. And then with that pattern of craters, SLIM compares it with its onboard maps, which it's got from previous orbiter missions, such as Kaguya and from NASA's LRO orbiter. And that crater pattern can actually identify very accurately where it is on the surface. And so in addition to its inertial navigation equipment, it has a much better idea of its location, and then it can autonomously correct to find out where it is. Now in Hayabusa and Hayabusa 2, which were the asteroid explorers led by JAXA, actual people perform the image matching operation as opposed to inbuilt software. But SLIM has the issue that it's not landing on an asteroid, rather it's landing on a moon. And while the moon is much smaller than the Earth, its gravity is much greater than that of an asteroid, and you can't have a slow descent. So as a result, you actually need to do this image matching scheme incredibly fast, otherwise the lunar gravity has just pulled you past the point where it's useful. Now the other factor you've got to consider is that space computers only have about 1/100th of the capacity of their terrestrial counterparts due to the very harsh conditions of space. So as a result, the team had to develop this image matching algorithm that required only a few seconds of processor time, otherwise you'd miss your chance, on equipment that was not cutting edge. And there's no redo on a moon landing. Once you start that descent, that is it. You can't just pull up and start again, unlike on an asteroid. So now we have a look at a couple of the other navigation equipments on board SLIM. The top is the navigation camera. These are two units that are actually placed at different orientations so that SLIM can examine the surface both during the para-descent phase and during the vertical descent phase when the spacecraft is tilted at a different angle. The middle part here is the landing radar. This is an altitude range sensor to measure the altitude and velocity in the direction of the lunar surface during that vertical descent phase. And finally, we have the laser rangefinder, which is much more accurate, and it's used during that final descent to pinpoint the altitude immediately before landing. So once we get to the point of the landing, we're actually landing on something that should be a 15-degree slope, and that's dangerous. It's very difficult to do. So in order to land safely on a fairly steep incline, we actually have this two-step landing system was adopted. And this was developed after copious amounts of simulations, both computer and
and practical to find out what's the safest combination for a spacecraft like SLIM so that it doesn't tip over. And the ultimate result was you land on the back legs and then you rock forward, as we saw in the movie, to a stable position. Now the legs of SLIM themselves are actually these 3D printed semicircular aluminium spheres, and they're designed to compress to absorb the impact of SLIM landing on the surface. This is a very compact design because much larger missions would use legs with joints, but SLIM doesn't have the space for that, so they have these very compact, crunchable 3D aluminium spheres. Now, just before SLIM lands, it's going to release 2 lunar excursion vehicles, LEV-1 and LEV-2, and these will be a demonstration of small probe movement technology on the lunar surface environment. So LEV-1 is the bigger of the two, it's 2.1 kilograms, 26 by 40 by 30 centimeters, and LEV-2 is a smaller round ball at 0.25 kilograms. And these two will communicate as follows. The LEV-1 will actually talk directly to the Earth, and it will move through this hopping motion where there is an arm that presses forward onto the lunar surface and it causes the rover to jump. And it has an antenna, so it can communicate its pictures and other information back to the Earth. LEV-2 is smaller, it's going to have wheels because it springs apart from its spherical configuration into these 2 wheeled parts, and it will send its data via LEV-1 back to the Earth. This is a close-up of the movement of LEV-1. It has this punching arm that pushes down to the lunar surface. Because the moon gravity is very weak, this is actually very effective, and the rover should jump forward a fair distance before coming back down to the moon. And this is LEV-2, also known as SORA-Q, and it starts off in a ball configuration, but once it lands it actually pops forward, and it has these 2 modes of motion, this kind of crawl and also a more butterfly-like motion. And so here we are, designing technology from an era of landing where we can to landing where we want. And if you're feeling worried that you didn't manage to absorb everything that was said, Mori-san will be back to take us through the key points just before we begin descent. So our next guests are members of the private company manufacturing behind the SLIM mission. First we have Okaida Yu, who's from the Mitsubishi Electric Company, sometimes referred to as Melco, and these are the spacecraft system contractors. Okaida-san is based at Kamakura Works, where SLIM was constructed. So Mitsubishi had actually a very tough job, since as we've seen, SLIM needed to be made as lightweight as possible. So if the spacecraft can be made lightweight, like SLIM, then you do have the option of increasing the mass available for possible observation equipment, and also costs such as transportation to the rocket can be kept very low. Such development therefore can lead to more frequent lunar and planetary exploration in the future. So this is why a lightweight mission was very important for SLIM, and the challenge of construction was passed at least in part to Melco. So one example of that is that SLIM's tank was a new design because it acted as the body of the spacecraft as well as storing the fuel. This actually meant the tank was more exposed and various devices had to be attached to the tank exterior. This was a new problem that had to be considered very carefully during the construction. Melco are also the spacecraft systems contractor for one of JAXA's upcoming missions, the Martian Moons Exploration Mission, MMX. MMX will launch in fiscal year 2026 and visit the moons of Mars, Phobos and Deimos. Spacecraft will land on Phobos and collect a sample from the moon, returning to the Earth in 2031. So our next guest is Akagi Kensuke from Takura Tomy. Now, Takura Tomy is very well known, but not for spacecraft. It's most well known for being a Japanese toy maker company. The company is perhaps most famous for originally creating the Transformers, the alien robots that can disguise themselves as machines.
However, in this case, Takura Tomy have built LEV-2, as seen here. It's a tiny little robot, also known as Sora-Q, and it's one of the rovers on the SLIM mission. And LEV-2 does indeed transform into the second image that you can see that Shin is holding. The rover is about the size of a baseball. It has a honeycomb aluminium alloy shell and starts off as a sphere, as you can see from Akaki-san's model that he's holding. And it then splits in half to reveal a pair of cameras that point front and back. And the two hemispheres actually become the rover wheels. So this little transforming robot will photograph the SLIM spacecraft and also the surrounding terrain before sending those images back via LEV-1 to the Earth. That's the front-forming cameras. And at the back it's even got a little tail for balance. So the first part was from the toy of the transformer. So it's called a transformation technique that it has been developing. And the second one is this. So imagine that the sea turtles move on the shore, and they're inspired by the movements, and then they try to capture and then try to have that mechanism embedded. So what I'm hearing is this is a transformer sea turtle. Yes, that's right. That's wonderful. It looks like this has been really creative process to invent this sort of toy, and is that right? And then he thinks that this is because of the company's strengths that the toy has been made into the space. Excellent. And toys like Transformers are incredibly imaginative, so maybe this is a more logical step than we might have previously considered. And it is unique. It is unique. So our next guest is Murata Tomakatsu from the Graduate School of Science in the University of Tokyo. So Murata-san is particularly interested in the science rather than engineering behind SLIM, and the science SLIM plans to do on the lunar surface. Murata-san has previously worked with a lot of lunar observation data, including that from the JAXA lunar orbiter Kaguya. So Kaguya, which was launched in 2007, orbited the moon and mapped the moon's geology all over its surface. The result were these very high-resolution maps that Kaguya and similar missions, such as NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, revealed. And you see these key bodies of rock that aren't particularly large areas, but are really interesting, and they could shed some light onto important questions in planetary science, such as those related to the moon's formation. So you have this situation now where you have fairly small but numerous regions of interest that you really want to get a look at. And this brings us to the need for SLIM's pinpoint landing technology and the ability to land on slopes, which enables us to choose a much wider region of possible landing sites and also land on some rough terrain, which is what we're seeing here. And we can actually get close enough with this technology to actually start studying these areas. So this important use case means that while SLIM is a technology mission and it's designed to be testing the pinpoint landing technology on slope terrain, the spacecraft is also equipped with a scientific instrument, the near-infrared multi-band camera, and it's designed to investigate the composition of the surrounding rocks after landing. And this takes us on to considering the landing destination for SLIM, which is near the Scioli crater, which I hope I'm pronouncing correctly. So Scioli is an impact crater, meaning that it was formed when a meteorite struck the moon's surface.
When a crater forms through an impact event, the debris from the deep interior can be ejected, and a central hill forms from those exposed deep materials. So in and around impact craters, we expect to possibly find rocks from the moon's deep interior that have been ejected, and these are often found in mounds in the centre of craters or the surrounding boulders in that region. So one of the minerals that is particularly interesting for this is olivine, which is quite a heavy mineral, and we expect it to have sunk into the moon's mantle during its formation. Therefore, if we spot olivine on the surface, it's probably a mantle rock that's been ejected from the moon's interior. And if we could land near one of those olivine-containing rocks and compare their composition with those on the Earth, it can tell us more about how the Earth formed, moon formed. And it might be taking like an hour to explain, but he'll try to say it in 1 minute. So here's a moon, and this is the So this is the shape of the rabbit, and you can see. And this is a pattern that you can recognize on the moon. So in Japan, well, the rabbit is what's seen on the moon's surface. That's right. And here he's pointing out the finger, and in that area, this is Mare Nectaris. yeah. So the Shioli crater is just right there at the spot of the right ear of the rabbit. And then it's trying to land on this exact spot, as you explained. So here it is. This is the rabbit's ear, and there are two rabbit ears. And the bottom one is the western side, and then this is where the crater is. So this is the landing site for SLIM. It's going to be on this crater where we think we're going to have exposed olivine material from the moon's mantle. And it's on this sloped terrain, so we have to land very accurately and on a slope. The crater itself is very small, like 1 kilometer, but SLIM is trying to get that. So by going there, by SLIM, what will we be able to find out? So this is beyond the SLIM's scope, but could you please tell us about the importance of this research? So one of the main theories for the moon's formation is that it formed during a giant impact with the Earth. If that's true, the composition of the moon's mantle, which is about 90% of the moon, would be expected to be similar to the Earth. So if we can identify a mantle rock, i.e. that olivine, and look at its composition in more detail, we'll learn more about the moon's formation. So Kaguya examined the moon's geology all over its surface. It spotted that near the Shioli crater was a place where the mantle rock seems to become exposed. And that's why SLIM is planning to touch down in this very small area and examine it with its multi-band camera. Could you please tell us more about this crater, Shiori? この幹の海の西側にはそのシオリクレーターという月のおそらくマントルですね、地下の物質が天体衝突によって折り返されて今表面に露出している。 So at the bottom of the slide here, we're actually seeing a model for how the moon might have formed. If we look at these cuts, they're actually cuts through a would-be moon. These sort of pizza slices where the core is at the bottom and then the surface is at the top. So going from left to right, the first slice, the green circles are this olivine, which is floating in initially a molten magma ocean that is thought to have existed on the moon when it first formed. If we go towards the right, we're going to see the moon start to evolve. This is the evolution a little later. The relatively heavy olivine has now sunk down to become sediment and begins to form the mantle. In slice 3, the lighter, buoyant, calcium-rich
plagioclase crystals, which were actually shown by little rectangles at the top, were rising to the surface, and these form the moon's crust. So then we only see olivine again if you can dig up some of that mantle, for example, during a meteorite impact, which might have created the Scioli crater. So in the larger picture, that the scientists will be comparing the formation of the moon and the formation of the Earth. By looking at that composition of the olivine, which should have come from the moon's mantle. 何か天体がぶつかってそれで月ができたっていうジャイアントインパクト説なのか、それともなんか別の方法でできたのかっていうことがその結論までもしかしたらできるかもしれない。はい、そういう議論までいけるかもしれない。The question is if that was a giant impact that created the Earth or not, but there might be more theory to come. So the research will be developed from this point onward. これからの月探査のやっぱりここにしおりを入れるイメージでつけられたと聞いております。So Scioli has a double meaning that by doing this, landing on this crater, it will leave the mark on history. And Scioli in Japanese means marking. So this is a double meaning. Oh, that's lovely. Okay, our last guest is JAXA's Vice President, Sasaki Hiroshi. 佐々木宏さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。佐々木さんは日本のアルテミス計画を統括されていると。So VP Sasaki is the Director General for Human Spaceflight Technology Directorate and the leader for Japan's participation in Artemis. So could you please tell us about what you are doing right now for the Artemis? 日本が参画をするというふうに発表しています。その際に参画としては大きく3つ So Japan has already said that it will be participating in Artemis. And then there are 3 things that we will be planning on doing. それを今後のアルテミス計画に参考にするといったものが一つ。それから月の有人の周回拠点ゲートウェイこれに対して生命維持装置を提供するとか物資を補給するといったものがもう一つ。それから最後が有人油圧ローバーを開発この3つになります。Okay, so the main goal of the Artemis program is to establish a human presence on the moon, but while doing so, that Japan will be contributing more on the robotics as well. And the first one is the crewed mission that will be setting on the foot on the lunar surface, and also another one will be sending the pressurized rover for crew driving on the lunar surface. So in Washington DC as well, that he has just been to, that they are paying much attention to this project SLIM. And because this is leading more techniques to be developed for Artemis in the future, so it has like a lot of anticipation and also excitement. And for Artemis project to be going on, that the both sides, so crewed and then uncrewed, so manned and unmanned projects are important. So they have to be developed in tandem. So the SLIM will just go on and then first focusing on the technology and what more can you do with this technique? So this SLIM's technique will leading us to go to the narrow space or the hidden space. So it will give us much freedom to move around on the Mars surface, on the moon surface. And then there will be more applications in the future. So we will be having more presence and also we will be building more trust with the partners. And it has been that Japan has great trust building by presenting trustful rockets. And also, we are adding more to this trust in the international partners. So that's this technique
will be highlighted and then it will be developed more in the near future. 的な注目も浴びるわけだし、それを日本として貢献していくのが今回スリムで実証される新しい技術であるということですね。はい。で、その技術を実証した上でね、またその次が期待される。So what's next? And then what can we say about the projects coming after SLIM? ということで、今後のミッション複数いろいろと検討していて、今後このスリムが成功した暁にはどんどん So we already have a few more things planned in the future. So this will be the critical time for us to look at the success of the SLIM. So does it include the pressurized rover? And yes, the rover as well, that it will go to the place where they want to go. So the pinpoint landing is necessary. そういうところでこういう無人探査でしっかりと行くということが大事で。But the rovers can only go to the safer places. So building this technique and then going to the place where is sort of hidden or it's very difficult to go, and it's still that technology will be useful in the future. 人が行くのは難しいっていうところはやっぱりその無人探査がまだまだその技術を持って。So that's exactly why VP Sasaki has been emphasizing the importance of both manned and unmanned exploration. And thank you very much. はい、ここでですね、いろいろ質問が来ておりまして、森さんに解説を少し。So now we're going to return to Mori-san, who's going to remind us of the key points as we head towards descent and landing. So here's our summary slide of SLIM attempting a pinpoint landing on the moon. The powered descent is from an altitude of 15 kilometers with 3 thruster boosts and coasting in between. We approach the target site on the lunar surface using this image matching navigation technology, where we're going to match the craters to known patterns on our onboard map using a navigation camera and autonomous guiding control. Then we begin the vertical descent from a 7-kilometer altitude. This includes 3 short hovering times. And we also do obstacle detection to avoid any dangerous boulders from about a 50-meter altitude. And then the 2 little Lev rovers are released at a 2-meter altitude before we do the 2-step landing on the sloped terrain. And we're aiming for a lunar landing accuracy of order 100 meters during this 20 minutes of terror. Landing can be confirmed relatively quickly, but more than that to do with the pinpoint landing accuracy might be determined as much as a month from landing. This curve is very important because we start from the altitude 15 kilometers, and by pushing it forward from that point, it will be going a little bit upwards, and then that will be very useful for the landing technique going vertical. And also the engine will be shooting down, so that energy will put the probe up there. So this curve itself is very much suitable for pinpoint landing. 今回非常に攻めた設計に見えるけど確立された手法なのでしょうかという質問が来ています。So this looks like a very difficult design, but what kind of things did you do to make it possible? Because SLIM looks like very much challenging, including many new techniques. So could you please tell us about the highlights? So that's right, that there are many techniques that they are pushing, and also they are really new and innovative. So what the team tried to do the most is try to have more and more experiments, and by getting successes, they are very confident to place those techniques put together in this probe SLIM. The rocket launched on the
7th of September, and around 4 months later that we are here today. And other missions, such as Russians and Indians, they took less time. So why did SLIM take 4 months? Could you please explain to us about it? 軌道ですね。早く入っていくこともできるんですけど、途中の軌道で少しお示ししましたように、最初月に入った後にそのまま月周回に投入に月周回軌道に投入することもできるんですけど、それやってしまうと燃料をかなり使ってしまいます。So this is something that we saw on the slide. So the swing by, we could probably just do one swing by to get into the moon's orbit. But by doing so, we need to put so much fuel on the probe. But we want to have less in a tank, so we decided to do the longer swing by and then have this slim orbit. So we chose this to have more efficient, and this has become one of the main goal of the SLIM project. So it's somewhat counterintuitive that this very long swing-by orbit turns out to be much more efficient on fuel. But even though it takes longer and it goes further, it is able to use the gravity of this Sun-Earth-Moon system to actually alter the position and attitude of the spacecraft to put it back onto a trajectory towards the moon. And this is actually much cheaper on fuel as opposed to braking when you reach the moon the first time to enter lunar orbit straight away. That's right. はい、そうですね。成功するためにやってきたと。 So what do you think that will be successful? もちろんこれまでの実績で言うといろんな海外でもいろいろ苦労しながら、失敗も重ねながらやってきてるっていうのは事実。 And it has been like many challenges and also failures, as we all know, but we would like to believe that this will work today. And we have many experiments and then many discussions. So today we believe that things will work. And sorry for asking the difficult questions, but as Mori-san explained, that many experiments proved that this technique should work. So, okay, next question, or maybe comments from the audience. As an aside, if you look at the moon that's in front of it's just gone off camera, but to the left of that is one of the actual landing legs from SLIM, so you can examine its mesh crushable structure when it comes back on camera. So can anyone observe it through the observatories or the telescope? And Mori-san's answer is that it's probably very difficult. We can't see SLIM. Too bad. So could you also tell us about this plan of landing on the slope? So could you please explain to me a little bit more? So from this angle you can see the 5 legs on the SLIM spacecraft, the rear leg that sticks out the furthest, and then a more square structure for the forward landing gear and middle landing gear. So SLIM initially descends vertically and it's going to land on that rearmost leg first. That's the first one that's going to touch the lunar surface. So it lands on the back leg and then it tips forward onto those front 2 legs. 2 steps.
ちなみにですね、ちょっと気になるものが横にあるんですけれども、これが、はい、着陸 And の let us see 足 this の model. What is it? 衝撃を吸収するものとなっていま I'm し glad て、 they came こ back れ to が実 this. 際に足についてるわけです。そうですね。このYeah, it's one of these little legs. こういったものも実際 So while a big lunar lander, such as Apollo, actually has legs with a joint that are able to absorb the impact, Slim has these very compact lattice-like legs that will compress on impact and absorb that force as it comes down on the lunar surface. はい、ここまで質問とコメントの紹介をさせていただきました。さてですね、着陸に向けた So this is the end of the Q&A and comment 5分となりまし section. た。ここで改めて、森先生、森さんに、スリムのポイントとそれから着陸 So there are について only 解説を 5いただ minutes き to たいと go. 思います。 So よろしくお願いします。はい、ではスライド Mori-san will review what will be happening in the next 月面のピンポイント着陸 yeah に in the next 挑戦します。 few 2段階でいきます。まず最初が So this is our pinpoint landing again. The powered descent from 15 kilometers, the vertical descent from 7 kilometers, その合間のホースティングから構成 the search for possible hazards, such as boulders. ですね。これ噴射しない状態なんですけれども、で後方カメラによる So overall, when it starts, it will take about 20 minutes. 20 minutes of terror. 標地点にまずは接近します。で2 So first it approaches to the targeted position, and then the vertical descent. And it will have 3 hoverings, and it will try to detect any boulders. で最後傾斜地に2段階着陸と And then when it approaches to the この slope 間20分間 and have ということで 2-step 月面着陸精度 descent and 100 landing. メーターオーダーを目指すというものです。で着陸は実は短時間で確認できますが、このピンポイント着陸の成否は着陸後、1ヶ月以内を見込んでいると。So it will be determined relatively soon about the landing itself, but the pinpoint or not, so how precise it was, it will take about a month to process. このテレメトリーというのは、その探査機から、スリムから送られてくるさまざまなデータのことを表す言葉です。So now let us explain about the telemetry. So we will be moving forward to the screen like this, and the telemetry is the data that has been sent from the probe. So this is the QL quick look screen, and we'll see this during the descent to the lunar surface, and it will display the telemetry, the data coming from the spacecraft. And we're going to go through just each of what you're seeing here to explain what it means. So this is the date and the time, in the top yellow. It's a spacecraft time, but that corresponds almost exactly with Earth time, as it only takes about a second for radio waves to travel between the Moon and the Earth. It's showing the time in UTC, Universal Time, which is Japan time at -9 hours. Now this part is the GNC, Guidance Navigation Control mode, and you can see the different options for the modes, with SPM being sun pointing mode, OCM being orbital control mode, etc. And it tells you what phase we're in at the moment. This is going to show us the spacecraft acceleration. It's the actual measured value of the accelerometer is on the left. The estimated value based on the model is on the right, and descending order for the acceleration goes from green through to red. This shows the status of the auxiliary thrusters. The scale here goes from 0 to 100%. And this is the status of the main engine injection, with a scale again going from 0 through to 100%. This shows the angular velocity of the spacecraft along the 3 axes X, Y, and Z. The colours here indicate descending orders of control error, with green having minimal control error. Gosh, we're going fast. This is the remaining propellant. The fuel is on the left, the oxidizer is in the middle, the total is on the right. The fuel to oxidizer ratio is 1 to 0.8. The BAT SOC is the remaining battery capacity, and now we are looking at, if this graph looks like this, it's the mode before powered descent. So altitude from the sun is seen on the left, the attitude from the Earth is on the right. This is now what it looks like when we go into the powered descent mode, showing positional information such as the trajectory, white line, and the actual trajectory. Is that right, in the red line? No, this is the vertical descent mode, my apologies. The last one was the powered descent mode, this is vertical descent mode.
ので応援よろしくお願いします。 And so that takes us into an era of landing where we can to landing where we want. So on the screen, you will see the same telemetry as the mission control room will be seeing. So we are now switching the screen to the telemetry. はい、ここからは、森さんと私で、テレメトリの画面を見ながら進めてまいりたいと思います。はい、今 PDM と左上の So during this phase, as we head towards the lunar surface, we are not going to say a great deal. Please watch the telemetry, and so you can see for yourself how the spacecraft is progressing, and there will be minimal commentary during this time. 進行中です。で、メインエンジンが今 100% になってますね。これもブーストをしている状態ですね。完全に噴射していて、今ブレーキをかけている状態と言っていいかと思います。Main engine is 100%. That means that it put the brakes. And now the altitude is 15 kilometers and slightly up. 白い軌道、右側のグラフのところで白いラインが目標となる軌道になっていて、So on the right, you see the graph, and the white is expected orbit. And the red one is how Slim is going. So now Slim is going more or less on the planned trajectory. 先ほど、動力降下シーケンスが開始されています。午前0時頃から、動力降下シーケンスが開始されておりまして、And it started descent. ブーストが行われております。これしばらくブーストが続いて、そのうちしばらく時間が経つと1回休憩になります。コースティングモード、コースティングに入ります。はい、コースティングというのは完成工法。そうですね。特にエンジンを吹かずに、補助エンジンは補助 So now the engines are on, but soon it will be turned off, just for a while. And then it will fly a little bit without slashing. 表示している画面、右下には第二管制室の様子を示しています。And on the right-hand corner, you see the second control room. こちらも画面に表示されているのは今この YouTube の画面に表示されている、テレメトリ表示画面と同じようなものを And in the second control room as well, that they are seeing the same exact telemetry as we see here on the screen. 真ん中の画面がそうですね。実際今先ほどの画面と同じ画面になってますね。今メインエンジンは2個 100% 噴射してますが、補助スラスターは12個ありますが、噴射しているものと噴射してないものがあって、これは軌道とか姿勢を補正したりするのに使われてますので、噴射の仕方はいろいろ変わってくるといったものになります。ओके तो डिसेंट चालू हो चुका है। आप टेलीमेट्री देख ही सकते हो जो स्क्रीन पर आपके अभी दिखाई दे रही है। उसके साथ यहाँ एक्सिस भी है, एक्सिस वाई, जेड और एक्स, और इन तीनों एक्सिस पर जैसे कि इंजन की फायरिंग हो रही है कुछ इस प्रकार आप यहाँ इंजन की मूवमेंट्स भी देख सकते हो। और जो अल्टीट्यूड है वो इस समय 15 से बढ़कर 20 किलोमीटर तक जाएगा। हार्डली 25 क्रॉस करेगा वो और फिर से नीचे कम होते हुए आएगा और फिर फाइनल जो डिसेंट जिसे हम फाइनल डिसेंट कहते हैं वो हमारे स्लिम लैंडर का चालू होगा। फिलहाल तो जो डीबूस्ट है, डीबूस्टिंग ये वो चल रही है, इंजन चालू है और 100% अभी फिलहाल तो आई गेस थ्रस्ट है इनका। और टोटल मास अभी 250 किलोग्राम बचा है। फ्यूल 135 किलोग्राम है और ऑक्सीडाइजर 115 किलोग्राम है। A って書いてあるのが加速度計で B がモデルで計算した数字なんです。大体一致していて、緑なので十分加速度が出ているってことを表しています。The velocity is just about right, so you can see it on the left bottom, and now you can see both A and B are green.
and it has been as it has been planned, so things are going okay on that side as well. はい、まもなく高度が25キロのあたりに到達するかと思います。そろそろ、コースティングに入るかなと思います。The altitude is now reaching 25 kilometers, and it will now go into coasting mode. いう状態です。で、この間に、先ほどの画像照合工法を行います。で、位置を、今まで蓄積した誤差を一回これでリセットできる、位置がバチンと決まりますので、これで完成工法でやってた位置のズレをこれでリセットするといった操作が行われます。はい。現在スリムは画像 ओके तो कोस्टिंग मोड चालू हो चुका है जैसे कि PSLV के लॉन्चेस में यहाँ हमें देखने को मिलता है जहाँ कोई भी इंजन वर्क नहीं करता तो कुछ इसी प्रकार इसका भी कोस्टिंग फेज चालू हो चुका है कुछ सेकंडों के लिए ही रहेगा ये ज़्यादातर और उसके बाद ये लैंडिंग का जो फाइनल अटेम्प्ट है वो करेगा Just about 25 kilometers. はい、今メインエンジン着火しましたね。100% になりました。これで第2回のブーストが始まりました。またこれでしばらくずっと噴射状態が続くかと思います。はい、時刻は0時5分を、0時6分ぐらいです。現在スリムは第2回のブーストを開始しています。So Slim is going into the second phase of boost. So now you can see the engine firing. 緑色に表示されているかと思いますが、これ緑色になっているってことは、姿勢がもう姿勢の制御が想定通りになっていると、姿勢誤差が小さいということを表しています。ओके इंजन फिर से चालू किए गए हैं इंजन्स का जो थ्रस्टिंग है वो वापस से चालू किया गया है आप देख सकते हैं しているので、基準軌道に沿って進んでいるというふうに考えていいかと思います。はい、現在 Now you can see the planned trajectory and the red trajectory is going on the model. So this is going very close to the planned trajectory. ओके डिसेंट जो है फाइनल वो चालू हो चुका है आप स्क्रीन पर देख एक साइड के जो इंजन है वो सारे के सारे बंद है मतलब व्हाइट में आपको दिख रहे हैं उनके थ्रॉटल्स और जो हमारे 3 साइड बचते हैं उनके इंजन अभी चालू है क्योंकि हमें उसको सीधा करना है उसको मोड़ना है उसको उसके जमीन की सीध में लाना है मतलब वर्टिकल करना है उससे तो इसीलिए आप देख सकते हो तीनों साइड के जो इंजन है वो चालू है और एक साइड के बंद हो चुके हैं क्योंकि हम अभी उसको धीरे धीरे करके सीधा कर रहे हैं और जो हमारा ट्रैजेक्टरी है जो मतलब अवलौकिक पथ है वो अनुमानित पथ पर अग्रसर होता हुआ और उम्मीद करते हैं कि उसी जगह पर एक्सपेक्टेड जगह पर प्रिसाइज लैंडिंग करे हमारा ये स्लिम बेसिकली देखते हैं आगे क्या होता है वैसे और अभी की बात करें तो लगभग 100 किलोग्राम फ्यूल बचा है ऑक्सीडाइजर 87 किलोग्राम है और टोटल 187 किलोग्राम है ओके सो देखते हैं और बैटरी की बात करें तो 83% है देखते हैं आगे कैसा होता है और Fuel's also decreasing as you can see on the right top corner and now you can see 96.6 kilograms of fuel and it will be about 10 kilograms or even a little bit slightly more so that's where we are aiming at so it will not be completely empty 緑のバーが今出てますが、最初2ぐらいだったのが今少し高くなってきていると思いますが、これ同じ水力は同じなんで探査機の質量が小さくなったので加速度が増えているっていうふうに見ていいかと思います。Velocity is increasing, that's on the left hand side, and because the mass is decreasing, that means velocity is
getting a little bit more in number. 第2回のブーストを実施中です。動力効果シーケンスにおいて第2回のブーストを実施中です。もうしばらく続きそうですね、これ。はい。It will continue a little bit. We are still on the second boost stage. ओके आप देख ही सकते हो हम काफी नजदीक अब लैंडिंग से लगभग कुछ ही सेकंडों की दूरी और जब ये स्पेसक्राफ्ट लैंड होते हुए हमें देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अभी जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वो भी कम हो रहा है धीरे धीरे कर और कुछ उसी प्रकार जो स्पीड है वो भी हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन उस स्पीड को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कुछ इंजन भी है जो इस समय चल रहा है। वैसे अभी RCS यानी रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स का प्रयोग चल रहा है ताकि क्राफ्ट को सीधा हम कर सके। अभी टेलीमेट्री में तो क्राफ्ट सीधा हमें नहीं दिख रहा है, मतलब थोड़ा टिल्टेड दिख रहा है, लेकिन यहाँ जो Z एक्सिस पर लगभग 0 डिग्रीज के आसपास है और X पर भी 0 डिग्रीज, मतलब लगभग स्ट्रेट है आई गेस। पर यहाँ जो एक्चुअल जो डाउन रेंज है वहाँ थोड़ा टिल्टेड ही है और वैसे इनका जो लैंडिंग का प्रेफरेंस है वो भी टिल्टेड है, मतलब वो सीधा लैंड नहीं करेंगे, वो ऐसा हॉरिजॉन्टली लैंड होगा थोड़ा बहुत, तो वही उनकी प्लानिंग है। तो हाँ कह सकते हैं एज पर प्लानिंग ये जा रहा है आगे। सो अच्छा है, कूल है। वैसे कुछ नया है इस बार कि ये टिल्टेड लैंड हो, पहली बार कुछ नया देखने को मिल रहा है, मज़ा आएगा। वैसे इंजन्स वगैरह जो है RCS वो काफ़ी अच्छे खासे थ्रस्ट कर रहा है इस समय। ये फुल थ्रस्ट दे रहा होगा शायद से, क्योंकि हमें जस्ट धीरे से टच होना है और फिर नीचे गिरना है ताकि हम ज़मीन से टकराए नहीं। अभी फ्यूल 65 किलो है और ऑक्सीडाइजर 60 किलो है। Still the second boost. और जो हमारा व्हीकल है वो लगभग अनुमानित पथ पर चलता हुआ, जो अवलौकिक पथ है वो अनुमानित पथ पर अग्रसर होते हुए, उसके साथ जो सेकंड बूस्ट है वो अभी भी जारी है। इसमें 2 अलग अलग बूस्ट थे। अभी जी हाँ 15 किलोमीटर की हाइट है अब हमारे इस क्राफ्ट की जमीन से, मतलब चंद्रमा की सतह से ऊंचाई केवल और केवल 15 किलोमीटर है। और अब जो कोस्टिंग फेज है वो फिर से चालू हो चुका है, जैसे कि आपने पहले देखा था। अभी कोस्टिंग फेज चालू हो चुका है, इसका मतलब कोई भी इंजन चालू नहीं है और इंजन सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। अब केवल और केवल क्रूजिंग या डिसेंट जो भी आप कह लो इसे, वो चल रहा है। image scanning right now. जी जैसे कह रहे हैं कि स्कैनिंग वगैरह अभी चल रही है, जो इसका ऑनबोर्ड सिस्टम से वो स्कैनिंग वगैरह कर रहा है। ओके तो देखते हैं थर्ड फेज में क्या होता है बूस्ट के। Now you see the engine is on now, 100%, and now the third stage of boost has just started. And the third one will not be 100% okay. all the time. थर्ड स्टेज जो मतलब थर्ड बूस्ट जो है उसको उसकी शुरुआत हो चुकी है और ये पिछली बार की तरह 100% थ्रस्ट पर नहीं चलेगा, ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा वेरी होते रहेगा क्योंकि हमें लैंड करना है इस बार। अगर हम 100% थ्रस्ट कर दिए
तो जो हमारी स्पीड है वो बढ़ जाएगी, इस कारण हम लैंड नहीं हो सकते। तो उसको ही अवॉइड करने के लिए हमें करना है, हम लैंडिंग से काफ़ी नज़दीक है अब, और मतलब अल्टीट्यूड काफ़ी कम है इस समय, लगभग 5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर लगभग आ ही चुके हैं हम। ओके ओके, पीडीएम जो यहाँ ब्लू कलर में दिख रहा है, मतलब जो ब्लू कलर में आपको मतलब ब्लू कलर के ऊपर जो व्हाइट कलर में पीडीएम लिखा है वो कुछ ही सेकंड में अभी बदल जाएगा, कुछ अलग वहाँ लिख के आएगा आगे, इसका मतलब जो है वो मोड स्विच हो जाएगा। तो देखते हैं मोड कब स्विच होता है, और लगभग हम काफी नजदीक है और अनुमानित पथ अवलोकित पथ पर है अभी, अनुमानित पथ अवलोकित पथ पर, सॉरी अवलोकित पथ अनुमानित पथ पर है अभी, और अल्टीट्यूड 5 किलोमीटर का है बचा सिर्फ। बेसिकली अभी चंद्रयान 2 की तरह ही मुझे वाइब आ रही है, मतलब हाँ जी हाँ, वीडीएम पर हम स्विच हो चुके हैं, वीडीएम स्विच हो चुके हैं अब मुझे ना चंद्रयान 2 की वाइब आ रही कि हम 2.1 किलोमीटर पर अटक गए थे, तो ये ना हो जाए अब यहाँ लगभग 5 किलोमीटर हम और बचे हैं, काफी नजदीक 5 किलोमीटर। ये अब चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की एक मिक्स्ड वाइब आ रही है मुझे। वैसे आपको कौन सी वाइब आ रही है, जो जरा मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि ये मतलब काफी अच्छा खासा अनुभव मिलता है इस बार। सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों आपके सामने है इस समय, और वीडीएम पर हम स्विच हो ही चुके हैं। तो वीडीएम से कुछ डाटा आप यहाँ राइट हैंड साइड पर देख सकते हो, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी और जब हमें लैंड करना है, 2.5 किलोमीटर लगभग, अब 2.5 किलोमीटर की दूरी और ओके 2.5 किलोमीटर और कम होते होते 2 किलोमीटर की दूरी रह गई है अब बस दोस्तों, 2 किलोमीटर की दूरी और ये जो फाइन ब्रेकिंग जो चल रहा है इंजन के, वो आप देख ही सकते हो, कभी 70% कभी 100% चल रहा है ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह, वो सब ब्रेकिंग मतलब वही थ्रस्ट दे रहा है ताकि एक स्पीड ब्रेक लग सके। अभी फाइनल डिसेंट चल रहा है, 34 किलो का फ्यूल है, 36 किलो का ऑक्सीडाइजर है, टोटल 70 किलो था, और बैटरी अब 80%। ओके 800 मीटर की दूरी, 800 मीटर फाइन लास्ट के 800 मीटर, ये कम होते हुए 600 मीटर, जी हाँ 600 मीटर, और धीरे धीरे कम होते हुए ये आगे जा रहा है। वोल्ट, वेलकम वोल्ट भाई, कैसे हो राज? ओके 500 मीटर की दूरी और ओके होवर कर रहे हैं, जो चंद्रयान 3 में हमने किया था एलडेक होवर, और 2 होवर हुए थे वैसे चंद्रयान 3 में कुछ इस प्रकार ये होवर कर रहा है ऊपर जमीन से कुछ हाइट पे, ये होवर करता है, होवर मतलब रुक जाता है इंजन चालू करके, तो वही होवर कर रहा है, और 500 मीटर्स की होवरिंग पर है अभी फिलहाल तो। ओके फिर से ये उसकी जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वो कम करते हुए 400 की हाइट पर आ चुका है अब, 400। ओके ओके 300 मीटर्स की हाइट पर अब नेक्स्ट जो एम है वो 50 मीटर्स की हाइट पर ये होवर करेगा खुद को, मतलब रोक के रखेगा 50 मीटर्स की हाइट पर, उसके बाद फिर लैंड होगा फाइनली 150 लगभग मीटर की हाइट पर हम पहुंच चुके हैं, काफी नजदीक जापान चांद की सतह से। ओके 100 मीटर की दूरी और काफी एक्साइटिंग है अभी काफी एक्साइटिंग लग रहा है। 75 मीटर की दूरी और काफी नजदीक है हम, 50 लगभग, जी हाँ 50 मीटर की दूरी अभी होवर कर रहे हैं, जी हाँ सेकंड होवरिंग है, जैसे कि चंद्रयान में भी हुई थी, चंद्रयान 3 में होवरिंग हुई थी, पहले बाद में एलडेक हुआ था पहले आई गेस, हाँ एलडेक के 2 होवर हुए थे आई गेस, कुछ उसी प्रकार अभी होवरिंग चल रही है। ओके रिलीज और लैंडिंग
लैंडिंग के लिए वेट करना होगा हमें। लैंड हुआ कि नहीं वो देखना होगा हम। ओके, लैंड तो हुआ है आई गेस। Around the 2 meters, it will ओके 2 मीटर release the lift and it will land. 2-step landing is expected. ओके MLM आई गेस। Now you see on the left hand side MLM. That means it has landed. ओके From the telemetry, it shows the sign MLM. ओके, टेलीमेंट्री से MLM आ चुका है, मतलब लैंड हो चुका है। पर देखना यह है कि क्या एक्चुअल में लैंड हुआ है कि नहीं। उसके लिए हमें सिग्नल्स आने की प्रतीक्षा है। अब उसके लिए हम रुके हैं केवल और केवल। एक्साइटमेंट वोल्ट, जी हाँ भैया वोल्ट, एक्साइटमेंट तो है, तगड़ी एक्साइटमेंट है। What we see is the slim has landed on the slope. स्लिम लैंड हुआ है पर तालियां बजी नहीं, क्यों? कुछ तो है अभी इन बिटवीन। वो कहते ना एक्साइटमेंट चरम सीमा पर, वैसा माहौल है इस समय। लैंड तो हुआ है, मतलब टेलीमेंट्री के अनुसार लैंड हुआ है, पर सिग्नल मिल नहीं अभी तक। बात कुछ हजम नहीं हो रही। अगर ओके कुछ तो कह रही है पीछे। एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल है। लैंड हो सक्सेसफुली, बस यही इच्छा है यार। नो मोर फेलियर, सन फेलियर नहीं देखने अब। प्लीज लैंड हो जाओ। ओके 18.8 किलोग्राम का फ्यूल बचा है, 24.9 किलोग्राम का ऑक्सीडाइजर बचा है, और अभी भी वेट 40। Looks like on the telemetry that slim is on the surface of the moon. और टोटल वेट इस समय 43.7 किलोग्राम है। और टेलीमेट्री के अनुसार स्लिम लैंड हो चुका है। MLM का मोड में है, मतलब लैंड हो चुका है। पर अभी तक हमें कुछ फुटेज या कुछ जो भी आप कह सकते हो, हमें कुछ भी मिला नहीं, तो ये नहीं हम कह सकते कि सक्सेसफुली लैंड हुआ है। लैंड हुआ है वो बात अलग है, लेकिन देखना पड़ेगा कैसे लैंड हुआ है। तो उसके लिए हम सिग्नल्स आने का वेट कर रहे हैं। हाँ, वही स्टेटस सिग्नल्स जो भी है वो आने का वेट है अभी भी। वैसे आप जरा कमेंट में बताओ जो भी देख रहे हैं, क्या आपके मन में क्या विचार है, क्या हो रहा है अभी बैकग्राउंड में इस समय। From the screen, Hopefully, the slim is on the moon. We are checking देखते the हैं status कि right now. कैसे होता है। ओके हाँ, देखना होगा कि आगे जाकर क्या होता है बेसिकली। ओके We are now checking the status of the slim. यस, It looks अभी like कुछ नहीं बोलना। हाँ वही on the moon from the screen that we see. But we वो are बेसिकली ना अभी चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के एक मिक्स्ड फीलिंग है अभी की बात करें तो। मतलब चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की जो मिक्स्ड फीलिंग कैसे आ सकती है ना, कुछ उस प्रकार की फीलिंग अभी आ रही है। लैंड हुआ है ऐसे टेलीमेट्री में दिखाई दे रहा है, सिग्नल नहीं मिल रहे या सिग्नल आए नहीं। वेल भैया सक्सेसफुली लैंड हो जाए बस। we are still checking the status. अभी भी स्टेटस चेक हो रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है भैया। वो बोलते हैं ना कि कुछ तो झोल हुआ है, कुछ उसी प्रकार। पर मुझे तो नहीं लगता कि कुछ झोल हुआ होगा इसमें, क्योंकि वैसे तो अच्छा खासा दिख तो रहा है। पर एक बात है कि सब लोग जरा एक बार यहाँ नोटिस करना, ये जो यहाँ
मतलब उनका जो बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो दिखाई दे रहा है ना, उसमें थोड़ा गड़बड़ मुझे लग रही है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ, अब देखिए आप इस पर्टिकुलर चीज़ को। वो चेक ही करेंगे क्योंकि ये उल्टा पड़ा है तो कैसे क्या सिग्नल देगा ना। अभी यहाँ ज़रा देखिए, ये उल्टा पड़ा है। देखिए दोस्तों, ये जो क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट है, ये उल्टा है। मतलब उसका जो सिर है, बेसिकली जो टॉप है वो नीचे है, मून के सरफेस पर टॉप है और इंजन उसका ऊपर है। वास्तव में ये स्केड्यूल्ड नहीं था, मतलब कुछ उस प्रकार के लिए वो मून को बनाया नहीं गया था। आप देख रहे हो, टॉप जो है वो नीचे है, जमीन पर है। टॉप जमीन पर है तो बॉटम उसका अब ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि ये उल्टा गिरा है। जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं गिरा, लैंड नहीं हुआ। पर बेसिकली ये ऐसा हॉरिजॉन्टल लैंड करने वाला था, तो हम कुछ कह भी नहीं सकते इसके बारे में, बस देखना होगा। इशू लग रहा है मुझे, हाँ मुझे भी वैसे ही लग रहा है, पर वेट करते सिग्नल्स के लिए। हो सकता है कि वो हॉरिजॉन्टली लैंड हो जैसे उनको चाहिए था। वेट करके देखते क्या होता है। सब्र बुरी वाला है, कुछ ऐसा होता है ना, राइट। देखते, वेट करके देखते क्या होता है भाई। बस निराश मत करना, सिग्नल के लिए वेट कर रहे हैं अभी भी सारे के सारे। We are still checking the status, so please wait. भैया ये उल्टा गिरा है, so please wait. स्टेटस चेक कर रहे हैं ये लोग। हम एचडी में देखते थोड़ा बहुत अब। ओके अभी एज पर ट्रैजेक्टरी जो स्लिम है वो लैंड हो चुका है, एमएलएम आ चुका है, पर पता नहीं एक्चुअल में सिग्नल्स हमें क्यों नहीं मिल रहे। मेहुल साधु, क्रैश लैंडिंग पॉसिबल। पता नहीं दोस्त, पर सुनना पड़ेगा भी, उनसे ही पता चल सकता है हमें। पॉसिबल हो सकता है क्योंकि यहाँ ट्रैजेक्टरी में ये उल्टा है, मतलब उसका सिर नीचे है। अभी ये लंबे चौड़े कुछ तो बोल रहे हैं, तो अभी हमें कुछ डाटा मिलेगा सुनने में। हाँ सुनते, अभी देखते क्या है। We are still checking the status, so we close this session at 12:30, and later on the same link and the same website that press conference will start. So please come back to the press conference. We are still checking the status. ओके, सो बेसिकली उन्होंने खुद कहा कि क्रैश लैंडिंग पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक स्टेटस नहीं मिला उन्हें। और वो ये लाइव स्ट्रीम, आई मीन ये जो हमारा लाइव चल रहा है, हमारा We are ending this program at 12:30, but we are still checking the status. उनका ये जो लाइव चल रहा है, on this channel that you उन्होंने इस प्रोग्राम को जो लाइव है स्ट्रेट एलिमेंट्री वाला, इसको कट करने का बेसिकली मन बना लिया है। तो इसके बाद अब उनका ये चलेगा, क्या बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्रैश लैंडिंग पॉसिबल है, देखते हैं अब फाइनली क्या होता है यार। पर काफ़ी यार मतलब क्या ही बोले, अब थोड़ा इमोशंस अलग है आ रहा है इस समय। और देखते हैं कि कैसा होता है। पर मेरा भी भैया मतलब कहना यही है कि क्रैश लैंडिंग पॉसिबल है। देखते हैं। So we will end this program at 12:30. The press conference will be held
on the same. Okay. So please wait until the Okay. press conference begins. Basically जो फाइनल उनका कहना है वो यही है कि अभी तक सिग्नल्स नहीं मिले और जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसके बाद चालू होगा और जो बेसिकली मेजर ये ट्रैजेक्टरी वगैरह हमें मिल रही थी वो कट हो चुकी है। सो यार अभी तक कुछ सिग्नल्स नहीं मिले होंगे। For watching. Thank you very much for staying with us. ओके, लाइव स्ट्रीम सस्पेंड हो चुकी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में चालू होगी। यार वेल आप लोगों को क्या लगता है ज़रा बताओ, मतलब सब बताओ। मैंने अभी जस्ट देखे सिर्फ 2 जनों ने कहा हमें क्रैश ही लग रहा है। वोल्ट ने भी कहा कि कुछ इशू है, मेहुल साधु जी ने भी कहा कि क्रैश लैंडिंग पॉसिबल चांसेस है। तो देखते हैं यार, बताओ आप 5 लोग देख रहे हो, उसमें से 2 लोग 6 लोग देख रहे हैं। अभी 6 लोगों में से 2 लोगों ने ही सिर्फ और सिर्फ वोट अपना बताया है। बाकी के भी बताओ, आप भी बताओ क्या स्टेटस आपके हिसाब से क्या होगा, क्योंकि लैंड एज पर ट्रैजेक्टरी ये लैंड हो चुका है, मतलब ट्रैजेक्टरी के अनुसार अनुमानित पथ पर लैंड हुआ है ट्रैजेक्टरी के अनुसार, लेकिन सिग्नल नहीं मिले। अगर ट्रैजेक्टरी के अनुसार लैंड होता तो सिग्नल मिलने चाहिए थे, पर ट्रैजेक्टरी में भी ये उल्टा लैंड हुआ है, तो आई गेस क्रैश लैंडिंग पॉसिबल, जिससे इसका हेड ही उड़ गया हो। पता नहीं गाइस, मिक्स्ड इमोशंस है। वेल आना चाहिए कुछ उनके साइड से कि हाँ यस इट हैज लैंडेड सक्सेसफुली वगैरह वो सब। बस लगभग 21:02 मतलब 9:02 हो चुके भारत में इस समय, और जापान में लगभग 12:30 होने को आ चुके होंगे अब, और जापान में अभी भी लोग जाग रहे हैं इस चीज़ को देखने के लिए, जो वास्तव में काफ़ी बड़ी बात भी है। भारत में भी लोग जाग रहे थे चंद्रयान 2 की लैंडिंग को देखने के लिए, और वास्तव में बाद में वो निराश भी उनको होना पड़ा, क्योंकि चंद्रयान 2 से हमारा संपर्क टूटा था 2.1 किलोमीटर पर। अब देखना ये होगा कि क्या चंद्रयान 2 की तरह ये सफल मिशन है या चंद्रयान 3 की तरह ये सफल मिशन है, मतलब सफल लैंडिंग है, देखना ये होगा। सो काफ़ी खूबसूरत सा मिशन रहा अब तक, ये सक्सेसफुल मिशन रहा अब तक लैंडिंग तक। अब लैंडिंग की बात जो है वो मतलब फिक्स करें क्या ये फेलियर है या देखना पड़ेगा, कुछ बोल नहीं सकते यार, और कुछ बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने इतना मतलब उनको काफी पैसे भी लगे हैं इस चीज़ के लिए, और वो कहते हैं ना कि स्पेस में या साइंस में कोई फेलियर वगैरह नहीं होता, जस्ट एक्सपेरिमेंट होता है, उससे हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। तो इस बार भी उनको कुछ सीखने को मिला होगा नया, ऐसी ही उम्मीद करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या वास्तव में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे हमारे साथ, मतलब क्या बोलेंगे हमारे साथ। उफ, ऑफलाइन हो गया था मैं, क्या हुआ? वोल्ट भैया कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो कुछ उनसे हमें जो जो हमारा स्लिम है वो लैंड तो हुआ है, मतलब उल्टा लैंड हुआ है। उसका जो टॉप है वो सरफेस पर है और जो बॉटम है वो स्पेस में है, तो कुछ इस प्रकार वो लैंड हुआ है। तो देखना ये होगा कि क्या होगा, मतलब क्या वास्तव में अभी ये एक्टिव है या कुछ उस प्रकार है, मतलब ऐसा मेरा अजम्पशन है कि वो अपसाइड डाउन लैंड हुआ है, क्योंकि टेलीमेट्री वो बता रही कि ये अपसाइड डाउन लैंड हुआ है। वोल्ट भाई अब देखना ये होगा कि चंद्रयान 2 की तरह यह मिशन होता है या चंद्रयान 3 की तरह, क्योंकि अभी इस समय हमारे जापान में भी 12-12:30 हो चुके होंगे, और भारत के चंद्रयान 2 मिशन की तरह ही वहाँ के लोग भी इस मिशन को देख रहे होंगे जागते हुए। तो देखना यह है कि क्या ये मिशन चंद्रयान की तरह सक्सेस होता है, चंद्रयान 3 की तरह सक्सेस होता है, या चंद्रयान 2 की तरह फेल होता है लैंडिंग के समय ही, देखना ये होगा। सो सैड यार, अब तक कोई न्यूज़ वगैरह नहीं आई।
हम वेट कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, ताकि हमें कुछ पता चले कि क्या असल में हुआ है इस मिशन के साथ, इस फ्लाइट के साथ। तो वोल्ट हम इसी चीज़ के लिए रुके हैं भैया। सो एक मिक्स्ड फीलिंग है यार। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन द मून, लैंडिंग ऑफ द स्मार्ट लैंडर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, जो चालू होगा थोड़ी देर में, उसके लिए हम रुके हैं बेसिकली। होपफुली लैंड हो भाई, लैंड हो। हमने एक बार चंद्रयान, वो कहते हैं हमने एक बार एक्सपीरियंस किया है, तो हम वापस फिर एक बार एक्सपीरियंस करना नहीं चाहते उससे। तो वही देखने लायक ये चीज़ है कि क्या हो रहा है अब। सो जो जिन्होंने लाइक नहीं किया इस स्ट्रीम को लाइक करो यार प्लीज़, एक बार लाइक कर देना स्लिम के लिए प्लीज़। एनीवेज आगे बढ़ते हुए भैया अभी तक कुछ न्यूज़ तो नहीं आई हमारे पास। ट्विटर पर जस्ट सेकंड, ट्विटर देख लेता हूँ मैं, ट्विटर स्क्रॉल कर लेता हूँ एक बार। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। ओके गाइज, ट्विटर ओपन कर रहा हूँ मैं अभी, पर क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा। वियर्ड चीज़ है यार ये। ओके, देखने लायक यह होगा कि एनिमेशन जो वो दिखा रहे थे वो अच्छा नहीं दिख रहा था, मतलब देखने लायक होगा कि क्या हुआ। ओके, अब तक कुछ न्यूज़ तो नहीं आई, बस मतलब कुछ न्यूज़ तो नहीं आई, पर बस एक ही है ये कि थोड़ा अनसक्सेसफुल होने की तरह इशारा कर रहा है ये मिशन। पर नहीं यार, फेल नहीं हो सकता ये मिशन, प्लीज़। ओके, देखते हैं और आगे। ओके, कुछ न्यूज़ यार आप भी कुछ बताओ मुझे लाइव चैट में। मैं लाइव चैट ओपन करके रखता हूँ। वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टली, हाँ मेहुल साधु, मैं वही कह रहा था कि ये जो मतलब ऑल द बेस्ट नेक्स्ट टाइम। अरे अंगाली रामानुजन भाई रुको ना, क्या आप जा रहे हो? सुन तो लो क्या हुआ एक्चुअली। मुझे तो नहीं लगता ये फेल हो सकता है मिशन, रुको यार। वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टली पोजीशन कन्वर्टेशन पॉसिबल तो है, पर रुको जरा।
देखते हैं क्या होता है। और आई मीन और क्या बाकी है इस मिशन में, वो सोच रहा हूँ। So probably अगर ट्रेजेक्टरी राइट है ना, मतलब जो ट्रेजेक्टरी में हमें दिखाई दे रहा है लैंडर अप, मतलब अपसाइड डाउन है। अगर ट्रेजेक्टरी में अपसाइड डाउन दिखाई दे रहा है मतलब ही जो लैंडर एक्चुअल में उल्टा लैंड हुआ है। अगर उल्टा लैंड होता है तो मिशन अनसक्सेसफुल होता है कि वो क्रैश लैंड करता है। और जो हमारे स्कॉट टिले भैया हैं उन्होंने भी एक ट्वीट कहा है, ट्वीट किया है। वो ट्वीट देख लेते हैं हम एक बार। स्कॉट टिले आपको याद होगा, उन्होंने ही चंद्रयान 3 को भी ट्रैक किया था। तो जस्ट अ सेकंड, स्कॉट टिले नहीं, सॉरी फॉर दैट, स्कॉट टिले नहीं, आई डोंट नो समवन, कोई तो एक अननोन यूज़र है। उन्होंने कहा है कि अलम, हाँ ओके ओके याद है मुझे नाम, वो हाँ दिखा अभी मैं ओपन कर रहा। बेसिकली एमसैट डीएल जो है, एमसैट डीएल ट्रैक कर रहे थे उस बेसिकली पर्टिकुलर स्लिम लैंडर को। तो स्लिम लैंडर इज ऑन सरफेस एंड बोथ नासा एंड both JAXA and Bochum are seeing its signal. The soft landing has succeeded. सॉफ्ट लैंडिंग सक्सीड तो तब होगी जब हमें सिग्नल मिलेंगे। बेसिकली देखते क्या हो रहा है, मतलब क्या होता है। वेल फेल हुआ है ऐसे लग रहा है। पर्टिकुलरली वाइब्स गंदे आ रहे इस समय यार। वाइब्स गंदे आ रहे कुछ भी हो। ओके अरे सीएसएन पे दो वेव्स रहे तो
सो गाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोग इतना टाइम लगा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ हुआ है। आइए थोड़ा रिवाइंड करके देख लेते हैं इस स्ट्रीम को कि क्या क्या हुआ है एक्चुअल में। मतलब एक्चुअल में ये लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, व्हाट हैज़ हैपेंड, वो देख लेते हैं। उससे हमें एक आइडिया लगेगा कि क्या हुआ था एक्चुअल में। सो अगर ये हमें पता चला तो वी कैन मतलब समझ में आ सकेगा यार कि क्या हुआ है एक्चुअल में। まだですね、こちらの方にも情報確認中という देखना लायक होगा अभी क्या होता है, 届いております。 राइट। もうしばらく सो देखते हैं। ओके सो कुछ अभी फिलहाल तो समझ में नहीं आ रहा है। आइए थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं तब जब ये लैंड हो रहा था। पीछे आई मीन बैक क्यों नहीं आ रहा है ये, प्रॉबेबली पीछे आना चाहिए ना। आई मीन जो लाइव है नॉन इंडियन स्पेस में भी किसी ने शेयर किया था, वो एक बार चेक कर लेगा। हाँ ये देख लेता वो एक बार। वो पास्ट 17 मिनट का ही दिखा रहा है। 右の方の絵で探査機がなんか0メートルに下に行ってる。 Rewind あれ、 video まあちょっとहै। 正確には聞いてはいないですけど、月の ओके सो देखना लायक होगा कि क्या होता है। बेसिकली जो सबको मतलब जो बेसिकली दिख रहा है सिग्नल जो आ रहा है, जो हमारे सेट को बेसिकली दिख रहे हैं, वो सिग्नल्स दिख भी सकते हैं क्योंकि उसमें जो रोवर वगैरह थे वो उसका खुद का इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन करने वाले थे। तो हो सकता है कि वो एक्सप्लोजन या जो क्रैश लैंडिंग जो भी हो उसके द्वारा बाहर निकल गया हो और उस क्रैश लैंडिंग की वजह से जो कम्युनिकेशन है वो चालू हो चुका होगा। देखने लायक होगा क्या होता है। सो स्टे ट्यून गाइस, क्या होता है देखने लायक होगा वास्तव में।先ほどから何人かの方にどこの局で受けてるんだっていう質問を受けて、ちょっと正確には確認してなかったんですけど、いろいろこういう運用の時はあって推測で国内の臼田内之浦あたりじゃないかって答えたんですけど、ちょっと今確認してもらってるのでその後またご報告しますね。
先ほどの局の話ですけど、今確認中で、後で記者会見の中でご報告するか、質問に答える形かっていうことで共有させていただくということになりましたので、お待ちください。ओके गाइज, फिलहाल के लिए जो स्कॉट टिली जो है उन्होंने एक ट्वीट किया है कि स्लिम का जो लेव 1 है वो ऑपरेशनल है 2276.99 मेगाहर्ट्ज पर एज पर एमसेट डीएल के लाइव स्ट्रीम के अनुसार। उसके साथ लेव 1 के सिग्नल जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। ये हो सकता है क्योंकि जो सेव पावर वाला जो फीचर है वो चालू हो सकता है। ओके, ये बेसिकली लेव 1 एक स्मॉल लैंडर है स्लिम पर। देखते हैं क्या होता है यार। मतलब आप ये कह सकते हैं कि स्लिम के लेव 1 ने सॉफ्ट लैंड किया है। दैट्स प्रीटी फनी गाइस, क्योंकि लैंडर रह गया दूर, रोवर ने लैंड कर लिया।
ओके गाइस, बैक अगेन। जो एमसेट डीएल है उन्होंने भी रिसीव किया है सिग्नल लेव 1 का और स्लिम का, मतलब स्लिम और लेव 1 दोनों का सिग्नल रिसीव किया है एमसेट डीएल ने। अब देखना ये होगा कि ऑफिशियल न्यूज़ जैक्सा से क्या आता है बस।はい、まだ状況確認中という連絡ですので、もう少々お待ちください。ちょっと時間がかかっていますけれども、まだ状況を確認している最中ということですので、もう少々お待ちください。
ओके गाइस, सो स्कॉट मैनली कह रहे हैं कि जो लैंडर है वो लैंड होकर रोल हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि ये लैंडर ने काफ़ी तेज़ी से लैंड किया होगा। दूसरी चीज़ जो हमने देखी भी कि लैंडर लैंड हुआ और तुरंत उसने शट डाउन नहीं किया उसके इंजन्स, वो भी एक पॉसिबल है एक सिचुएशन। उसके साथ लैंडिंग के वक्त लैटरल वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, जिसके वजह से एंगुलर मोमेंटम की वजह से रोल हो चुका होगा लो लूनर ग्रेविटी पर। उसके साथ जो ओरिएंटेशन है स्लिम का वो चेंज हो चुका होगा। मतलब स्लिम के जो सोलर पैनल का जो बेसिकली ओरिएंटेशन है वो चेंज होगा वेस्टवर्ड्स, जिस वजह से सनलाइट जो है वो उस तक नहीं पहुंच पा रही होगी वगैरह वो सब है। अब देखने लायक है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। थोड़ा सा काफ़ी अलग ये अभी फ़िलहाल तो चल रहे मिनट से एक एक घंटे की तरह चल रहा है अभी फ़िलहाल तो। सैड अबाउट दैट। पर सक्सेसफुल लैंड हो चुका है आई गेस। सिग्नल आ रहे हैं, मतलब लैंड हो चुका होगा। देखना पड़ेगा अभी और वेट करेंगे हम और।
thank you everyone at the Sagamihara the campus, and also people participating through WebEx, and those people looking at this through YouTube. We are still trying to confirm the situation at the moment, and so I apologize to keep you waiting, but please bear with us for a little more while. And we did actually say that it could take as long as 2 hours at the most in the press kit in advance. And for those people participating through YouTube, please understand that it is taking a little bit of time, and we are trying to confirm the situation. Thank you.